discuss today conference will now be recorded. a new topic in operator, that is equality operator. What is equality operator? Okay, equality operator. Now in equality operator we have two types of operator. One is double equal and one is not equal. Okay, where this double equal and not equal, they are called comparison ऑपरेटर. ठीक है, किस तरह के ऑपरेटर है ये? कंपैरिजन ऑपरेटर. वी कैन कंपेयर, ओके, वी कैन कंपेयर वन कंटेंट टू अनदर कंटेंट ओनली. ठीक है, यानी कि यूज्ड टू कंटेंट कंपैरिजन ओनली. ठीक है, इसलिए यूज होता है केवल कंटेंट कंपैरिजन के लिए. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 10 इक्वल है 10 के, a इक्वल है a के. ठीक है, इन दैट केस if the content is same in this situation, it returns true, or either returns false. ठीक है, so let's have some basic examples. ठीक है, start with some basics to advance. maybe some 10 not equal है 10 के. in that case what will be the output? 10 not equal है 10 के means false, because they are equal and I am checking the not equal comparison, so it will return false. Okay, okay, now what we have, I am checking 10 equal है 10, definitely true. I am checking 10 not equal है 10 के, false. 10 not equal है 11 के, definitely true. ठीक है, so that's like if I'm checking true equal है true के, so that is what true. Why? because true stand for 1, so it means 1 equal है 1 के, definitely true. 1 is true, equal है false के, so return what false, because 1 is not equal to false and I am checking true equal है false के. so you know that that concept very well. I'm just providing you some different concept on it. okay, not equal है false के, definitely true will be the output. okay, so this operator is used to कंटेंट कंपैरिजन, है ना, कि जो कंटेंट है उसके कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल आई एम चेकिंग x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 100. ठीक है, इफ आई चेक x इक्वल है y के, तो डेफिनेटली फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ y. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो चेकिंग होती है वो केवल जो चेकिंग होती है बच्चों, वो चेकिंग होती है केवल कंटेंट की, कि जो भी वेरिएबल है, जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं, क्या वो एक डेटा दूसरे डेटा के इक्वल है या नहीं है. अगर हमें एड्रेस कंपैरिजन करना है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कि जहां पर हमने वन ऑब्जेक्ट को शेयरिंग करने की बात की थी, एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल
जगह पर शेयर होता है ना, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल को शेयर होता है। वहां पर जब हमने बात करी थी तो वहां पर हमने ये बात की थी कि अगर x इक्वल टू है 10k and y also equal है 10k, if I want to check the address तो x is y, तो वहां पर हम यूज करते हैं is ऑपरेटर टू चेक द एड्रेस। क्या क्या x और y एक ही एड्रेस को बिलोंग करते हैं? क्या x और y एक ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं? in that situation we use is operator, but equal operator is only used for which type? Only used for contained comparison type. If some having some value, for example I am checking Arun इक्वल है अरुण के, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू। इफ आई वांट टू चेक, ठीक है, इफ आई एम चेकिंग अरुण इक्वल है कैपिटल अरुण के बच्चों, बिकॉज दिस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट इज द रीजन ओनली दैट स्मॉल अरुण इज नॉट equal to the capital A Arun, right? Because it is a case sensitive language, that's why it is showing this. Okay, I am checking A equal है 97k. Anyone able to give the answer of this output? Yes, I received some outputs. True. Okay, true. Okay, Vidushi say false, Anushka say true. Okay, so what happening here? Listen guys, मैंने अभी कहा कि यहां पर ये कंटेंट चेक करता है ना, और आप लोगों ने क्या किया? विदुषी इज द राइट आंसर, विदुषी का आंसर सही है कि यहां पर जो ए है दिस इज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड आई कंपेयर दैट डेटा टाइप विद द इंटीजर। हाउ इट इज पॉसिबल? फॉल्स। डोंट चेक द अस्काई वैल्यू कि भाई ए की अस्काई वैल्यू भी 97 होती है एंड इसकी भी अस्काई वैल्यू नहीं, आपको कंटेंट चेक करना है, ये अलग वैल्यू है, दिस इज ए डिफरेंट वैल्यू, this is the integer value, this is the string value, so no comparison at all, so the output will be false only. ठीक है, let's have another one. if I'm checking 10 equal है 10.0k, in that situation what will be the output? Yes, true or false? True. Okay, Ashish true, Kailash true. Yes, anyone? Tanuj false, Vidushi false, Ekta false. Okay, बच्चों, but internally देखिए the value of 10.0, don't check the data type, value must be same, 10.0 just equivalent to 10 ना, so yes, happily possible, true. Okay, कोई बात नहीं, true answer है इसका भी. Now one thing is there, if I am checking 10.1 equal है 10.10 के, just I am telling you the possibilities, so you must have a clear clarity about this topic. So just tell me 1.0 equal है 10.10 के, definitely true, because the zero is no matter here. 10.1 equal है 10.10 के, definitely true. Okay, listen one thing, this operator never give you error, if the content is same return true, if the content is not same returns false, yeah? Even this operator also work on, just I am using another file, just wait. I am checking 10 plus 20j equal है 10 plus 20j के, ठीक है, so definitely
true will be the output. So it works on complex numbers also, no problem at all. ठीक है? And this operator also provide you chaining concept, chaining concept, ठीक है? Or should I say chaining comparison, ठीक है? Like what? Like what? 10 इक्वल है 10 के इक्वल है 5 प्लस 5 के इक्वल है 2 into 5 के इक्वल है 11 minus 1 के. ठीक है? If I use this concept, so happily possible that true, because in every case 10 will be the output. 10 इक्वल है 10 के, 5 plus 10, 2 into 5 10, 11 minus 1 equal to 10 also. So this can work on multiple comparison on the chaining concept. Okay, we learned this chaining concept on the relational operator also, like greater than, smaller than, right? So this is also works on your equality operator, should I say comparison operator. Is it clear to all? Okay, so this operator is only used for content comparison, not for other cases, only used for content comparison. If the content is same either in the variable, either in form of, we are checking at the form of constant value, if the content is same, this operator always return true. Is it clear? Any explanation required for this? Anyone? Okay, so let's move on. Next topic. Next topic, logical operator. ठीक है? तो लॉजिकल में आपके कौन कौन से होते हैं बच्चों? एंड, और नॉट. ठीक है? So you know the concept of and or not. Huh? Just I am talking about on the Boolean value. Just true and true. Yes, what is output? True, right? True and false. Then what is the output? False. I write not true, change to the convert कर देगा किसमें? false में. I am writing not false, किसमें convert कर देगा? true में. I am writing true or false, then output will be true only. ठीक है? So you know very well on the case of Boolean value. So these operator can work on Boolean value as well as non-Boolean values. ठीक है ना? ठीक है? For Boolean values क्या आएगा इसका कंपैरिजन? Boolean values and के लिए क्या है? if all values are true. ठीक है? if all values should I say argument, then you know what is the meaning of argument here. As you are writing true and true, so this t is a first argument, this t is second argument. More than one argument can be used. So here starting to argument is true but this argument is false, so resultant will be false only. Okay, so that is means the argument. Okay, that is mean of argument. argument, ment, argument. ठीक है? are true. If all values argument are true, returns true. ठीक है? क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा.
और के केस में if any value argument is true returns true, ठीक है। एंड नॉट का आप लोगों को बताइए क्या कर देता है, उसको चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, you know very well, we can use this logical operator on non-boolean values, ठीक है। if I'm checking this on non-boolean values, then what happens? So here 3 points you must be remembered. 0 means false, 0 means false, first point. Second important point, non-zero means true, non-zero means true, 0 means false, non-zero means true. And empty string is what? False. Empty string what? False. You know what is the empty string? Having no character, just curly braces start, just quotation marks start, just quotation marks close. That is called what? That is called a empty string. So if I'm talking about the empty string, so it will be false. Now in case of x and y, okay, suppose I have first argument x and I have second argument y, then what happened with this? Listen one thing very carefully. Listen, if x evaluates false, ठीक है, if x evaluates false, ठीक है, then result x, otherwise returns y, okay, or should I say right, return x, otherwise return y. Very important point for this. If x evaluates false, then return x, otherwise y. Let's see a simple code. I am writing 0 and Arun. Listen one thing. If x, this is x, है ना, और Arun is y. Listen one thing. This is x or Arun is y. I just change my color, pen color to red. Yeah. And I'm clearing this window again, and I'm using pen. So this is 0 and this is Arun. So this is x. This x means what? False. If x is false, then what? Output will be what? X. Output will be what? X. Right? If otherwise y. Let's suppose I am taking 1 and Arun. Listen one thing. Then output will be Arun. According to this statement, see very clearly that what happening here. If x evaluates false, listen one thing. This, just check this. Okay. Okay. If x evaluates false, okay, check the condition. X is what? False. Then return x. So output will be 0. Otherwise y means अगर x मेरा false नहीं है, false छोड़ के कुछ भी है, तो रिटर्न हमेशा क्या करेगा? y रिटर्न करेगा. ठीक है? Getting this point? With non-boolean case, non-boolean values के साथ क्या केस है? एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा? non-boolean values में if x is not evaluates false, अगर x false नहीं होता है तो उस कंडीशन में आउटपुट हमेशा क्या होगा? आपका y हमेशा आउटपुट होगा. ठीक है? लेट्स टेक ए फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन इट.
just I'm taking and 100. What will be the output? Anyone? 100 कैसे आएगा अनुष्का? क्योंकि ये कैसी स्ट्रिंग है? दिस इज व्हाट? एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए मैंने अभी क्या बताया था? मैंने बताया था एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग क्या कंसीडर होगी? जीरो। इन दैट केस आउटपुट विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग ओनली, जीरो नहीं। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स नहीं आएगा अनुष्का। एम्प्टी स्ट्रिंग मींस मैंने क्या कहा? आउटपुट मींस एक्स। यहां पर जीरो का मतलब एक्स था। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अरुण एंड एन फॉल्स हेयर कि फर्स्ट इज ट्रू, अरुण इज यानी कि x is true, then output will be ऐसे गुप्ता here. First is true, there can be any data, first is true, then output will be y के मतलब क्या है? गुप्ता, तो output will be गुप्ता here. There is no false and true concept. The false and true always in case of boolean values. The false and true always in case of boolean values. I'm talking about non-boolean values. I'm talking about non-boolean values from there कि अगर non-boolean value के केस में अगर आपका x, this is the first argument, let's see, this is the x, okay, the first argument if false then return x, otherwise return y. If suppose I'm taking here I'm taking here a false, again false and I'm taking here 1000, in that case false will be output because I'm taking x value as a false, I'm taking x value as a false, so output will be this. If I'm taking the x value as a true, then output will be y only, the output will be y only. Okay, anyone having any doubt on this? Let's suppose I am taking 10 and 20. What will be the output? Yes. 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 That's good. That's good. 10 and 20 because first is true, then output will be y. ठीक है 20. One question I have, 0 and empty string. In that case, one question is asked by one student, 0 and empty string. Listen carefully. Anyone can able to give the answer of this question? 0 and empty string. 0 definitely. भाई यहाँ पर आपकी empty string है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट आपको चेक करना है इस केस में, क्या चेक करना है? इसको चेक करना है एक्स को. ठीक है, अगर एक्स हमारा 0 है तो डेफिनेटली एक्स ही हमारा आउटपुट आएगा, मतलब एक्स की जगह पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वही हमारा आउटपुट मिल जाएगा. इज इट क्लियर? यस एवरीवन, एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस? यस एवरीवन, okay, no message means all clear, right? So let's move to the next part. Move to the next part. X and y I'm taking here. Next we have x or y, x or y. Okay, this is for the x and y, and later we discuss x or y, in case of x or y. x और y, ठीक है. इस केस में क्या होगा? if x जस्ट अपोजिट है, x is evaluates true. ओके, पहले हम किसको इवेल्युएट कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे फॉल्स के केस पे. नाउ हम x को इवेल्युएट कर रहे हैं क्या? ट्रू. then x otherwise returns y, then returns x otherwise returns y. ठीक है, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? y रिटर्न करेगा. अगर x की वैल्यू ट्रू इवेल्युएट होती है तो x, अदरवाइज रिटर्न y. ठीक है, लेट्स सपोज, just opening a new,
X, no, I am taking 10 or Python, 10 or Python. Then what will be the output? If X evaluates true, 10 is what? True. Then what will be the output? 10 will be the output, right? That's good. Okay, from everyone I received some, from 4 students I received some message. So all student messages, question is output is right, right? Next we have I'm taking false. I'm taking false and I'm taking operators. Then output will be 0. Oh, sorry. I'm taking and here. I need to write or, sorry, or. Then output will be operators, right? Then output will be operators, because if the X evaluate false, ठीक है, not true, false, कुछ भी, तो उस सिचुएशन में Y returns, Y के बाद जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी in case of or operator, in case of or operator. Is it clear? Okay. Okay, one more case I have, 10 or 10 by 0. Yes. Anyone able to give the answer? 10. Okay. 10, 10, 10. Reason is what, guys? Because this is true. है ना? In case of or. If this is true, it return the same value. है ना? 10 will be the output. बट कंसीडर वाली बात क्या है, मैंने ये क्यों दिया है, इसमें छोटी सी चीज समझने वाली है कि 10 डिवाइड बाई 0, it is not a valid statement, it is not a valid division concept, because any number divided by 0 always returns infinite, है ना? In mathematics you know that concept. If any number divided by 0, it stands to infinite, but infinite is not such a term in computer application or in programming term. So that why if the 10 any number divided by 0, Python always give you divide error, Python always give you divide error. But in this case, because 10 is the first and this is the true, so it will return 10. Okay, if I do the same concept, or 10 modulus 0, in both cases output will be 10. If by mistake I use and I use 0 here, है ना, and I use 0 here, ठीक है, and I'm using, sorry, or maybe or, right, or 10 divided by 0. In that situation, 0 divide error, integer division or modulo by 0, यानी कि 0 डिवाइड एरर आपकी तब आएगी जब आप किसी भी इंटीजर डिवीजन को या किसी भी डिवीजन को मॉड्यूलो कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं आप? 0 से कर रहे हैं. In that situation it always return a error. Next we have 0 or 10 divide 0. Yeah, in this same case again 0 division error, division by 0. The error is what? Division by 0. This is not possible. Okay, the next case 0 or 10 divide 0. ठीक है, in case this case also 0 division error, float division by 0. ठीक है, any number which is try to be divided by 0, according to mathematics it is infinite, but infinite such type of facility, such type of things not available in Python. So Python will give you a error, a compile time error, that this is not a valid statement. And why this is not a valid statement? Because 0 divide division error, it is not a valid error. Is it clear to all? Yes. Anyone? Okay, that's good. Now one thing is more,
Okay, the next one we have the next one we have assignment operator. Okay, what is this assignment operator? This equal sign is assignment operator, है ना? Then how it is work? I'll write a equal to 10. So the value 10 is assigned to a. The value 10 is assigned to a. ठीक है? One another concept is here. Another concept here a comma b comma c. A comma b comma c comma d equal to 10 comma 20 comma 30 comma 40. ठीक है? So in that situation 10 will assign to A, 20 will assign to B, 30 will assign to C, and 40 will assign to D, right? Just see this code. Okay. So you can check A equal to 10, B equal to 20, C equal to 30, D equal to 40. Okay? So this is called a simple assignment concept. Here we can assign more than one variable at the same time. Here we are assigning a single variable at a same time. Okay? If by mistake okay, if by mistake what you did that a comma b comma c comma d equal to 10 comma 20 comma 30. Here is how many variables are? Four variables. I'm high values I'm assigning three values. So compiler give you a clear error. कह रहा है expected 4. उसने 4 को expected किया था values को, लेकिन आपको उसने कितने दी? Got 3. उसको मिली कितनी? 3 मिली. वैल्यू एरर नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक. कह रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज आपने नहीं प्रोवाइड कराई हैं. बहुत सारी नहीं कह सकते, इनफ, जितनी जरूरत है, जितनी वैल्यूज की जरूरत है उतनी भी अवेलेबल नहीं है. इन दैट केस ये क्या कह रहा है? नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक. एक्सपेक्टेड फॉर गॉट 3 एंड वैल्यू एरर इज दिस. ठीक है, वैल्यू एरर. Next we have a next thing, what? Compound assignment operator. ठीक है, compound assignment operator. ठीक. In this compound assignment operator what happened, that you know I am writing 10, sorry, a equal to 10, a equal to a plus 10. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे कि a इस वेरिएबल को हम a हटा के इस प्लस को उधर यूज कर लेते, मतलब a plus equal to 10, something like this. ठीक है, Python called this compound assignment operator. More than one operator can be combined at the same time and we can use them. That's called compound assignment operator. ठीक है, in this compound assignment operators we have plus equal, minus equal, multiply equal, और divide equal, modulus equal, ठीक है. These are the all arithmetic operators. One is equal. ठीक है, all arithmetic operators.
Apart from this, bitwise operator, bitwise, we have not learned about this because bitwise operator. Arre, bitwise operator and and equal and equal और equal और equal. उसके बाद आ रहा है कैरेट का साइन, ठीक है, इक्वल. उसके बाद है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है. So these are the all operators on which we can apply our compound assignment operator concept, ठीक है. These are the few operators. These operators we will not run due to the in this academic session. Later we discuss on it. We only learned about these operators, should I say, and these all are the arithmetic operators. These all are the arithmetic operators, right? Now, yes. One is negation. Yes, agree. नॉट का सिंबल मैं लगाना भूल गया, ठीक है. ठीक है, so that all things is available in Python, right? As like C language, C++, ठीक है. Some of the few limitations for some of the few advantage, that's okay. Now one thing is here that we have learned about the compound is assignment operator as well, okay. So up to now I end this session, okay, and we will continue tomorrow at same time 12 o'clock.